Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, Science of Life with Dr. Mohammed Yousaf. We are discussing the physiology of pregnancy. Last time we had started the discussion of functions of placenta, and we discussed the functions of placenta and the very important aspect of the functions of placenta, that is the hormonal functions that those were left for today's lecture. So I am going to discuss the hormonal factors in pregnancy today. But before that, one hadith as per my routine. हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अन जाबिरिन हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है क़ाला समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु ला तमूतन्ना अहदकुम इल्ला व हुवा युहसिनु ज़न्न बिल्लाह। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना, समिअतु मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलो कि वो फरमाते थे ला यमूतन्ना अहदकुम, तुम में से किसी को मौत ना आए इस हालत में इल्ला सिवाय इसके कि वहुवा युहसिनु ज़न्न बिल्लाह, कि वो अल्लाह से अच्छे गुमान रखता हो। तर्जमा देख लें, फिर ज़रा सी बात करते हैं कि रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लम को फरमाते सुना कि तुम में से हर एक को चाहिए कि उसको ऐसी हालत में मौत आए कि उसको अल्लाह के साथ अच्छा गुमान, यानी उसको ये ख्याल हो कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ करेगा, इंशाल्लाह मौत आ जाएगी, मैं अच्छी जगह से जाऊंगा, मुझे अल्लाह पाक मग़फ़िरत करेगा, मेरे अमाल की गुनाह जो हुए माफ़ करेगा और मुझे आखिरत में अच्छा मकाम देगा, ये गुमान हो। और ये गुमान तब डेवलप होगा जब हम जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों के मुताबिक गुजारेंगे, इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, जो गुनाह होते रहें उनसे तौबा करते रहेंगे, तो फिर डेफिनेटली आस्ता आस्ता ये डेवलप होगा, ये सेंस के अल्लाह बहुत मेहरबान ज़ात है। अल्लाह मेहरबान ज़ात है, लेकिन हमें अपने अमाल को ठीक रख के अल्लाह को मेहरबान ज़ात मानना है, तो फिर जो हमसे कसूर हो जाए वो अल्लाह माफ़ करेगा। और ये हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला इस हदीस की मैंने तो सिर्फ अल्फाज लिखे हैं ना, कि मैंने ये सुना है। उन्होंने साथ ये भी फरमाया कि मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 4 दिन पहले ये बात उनसे सुनी है। इसका मतलब है कि वो उसके लिए बीमार पुरसी के लिए तशरीफ़ ले गए होंगे, तो उस वक्त शायद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात फरमा रहे होंगे। तो अल्लाह पाक हमें इस बात की तौफीक दे कि हम ज़िंदगी ऐसी गुजारें कि मौत के वक्त हमें यकीन हो, हमें ख्याल हो कि अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह हमारी उखरवी ज़िंदगी इंशाल्लाह अच्छी होगी, अल्लाह हम पे रहम करेगा, ये हमारा गुमान हो। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। So we are going to discuss the hormonal factors in pregnancy and other endocrine glands of the mother. We are going to talk at the end, but very important aspect of the functions of placenta is the hormonal functions of placenta. Placenta produces very important 4 or 5 important hormones. 5 important hormones we can list. First of the earliest hormone to appear from the placenta is the human chorionic gonadotrophic hormone. इसका पहले भी कहीं जिक्र किया था, टुडे आज डिटेल में आ जाएगा। So an estrogen is also produced from placenta. Progesterone is produced from the placenta. So these two ovarian hormones, they are also produced from the placenta, with some difference we are going to talk about. And there is the fourth hormone, human chorionic somatomamotrophic hormone. Human chorionic somatotrophic hormone, growth hormone. Somatotrophic hormone is growth hormone. It is mamotrophic, that is the lactogen, prolactin. So the human chorionic somatomamotrophic hormone combination, दोनों की जमा है, that is lactogenic effect भी है और somatotrophic effect भी है. So these 5 hormones plus the relaxin, the hormone, it is also produced from the corpus luteum as well. Ovaries also produce this, but relaxin. So these 5 hormones we are going to talk about. First of all, the human chorionic gonadotrophic hormone. As we know, without pregnancy, the menstrual cycle or female reproductive cycle
of 30 days, 28 days, or plus minus a few days. Involution of corpus luteum usually occurs after 12 days of its formation. 12 days after ovulation. Corpus luteum is formed after ovulation. We have discussed the ovarian cycle. So corpus luteum, lifespan of the corpus luteum, that is almost 12 days. This is fixed. And 12 days पे ovulation होती है, and then those two hormones, estrogen, progesterone, from the corpus luteum, they disappear, and that cause the menstruation in non-gravid, without pregnancy menstruation ऐसी होती है. Involution of corpus luteum leads to absence of estrogen and progesterone, that leads to menstruation. If fertilization occurs, if implantation occurs, we have seen that implantation occurs on 8th to 9th day after fertilization or after ovulation, you can say. So if this has to be prevented, that is, if implantation has occurred, if fertilization has occurred, then corpus luteum has to be prevented, and absence of estrogen and progesterone has to be prevented. So this has to be prevented if fertilized ovum has implanted. Otherwise, in menstruation, this will be lost. So this is the first function, important function of human chorionic gonadotrophin. This is the HCG, or human chorionic gonadotrophic hormone, is responsible for the, it is the earliest hormone पहले भी बात की, and it is secreted by syncytial trophoblast. It is responsible for this prevention of this. This prevents the involution of corpus luteum. It is produced from at the time of implantation. Implantation is on 8th or 9th day, and very quickly, very early part of the after implantation, some level, some from the syncytial trophoblast, there is production of this human chorionic gonadotrophic hormone to prevent this. So prevention, that is the most important, utmost important in the early part of the pregnancy, the functions of this placental gonadotrophic hormone, human chorionic gonadotrophic hormone. Chemically, it is a glycoprotein. थोड़ी सी chemistry भी बात कर लें. Molecular weight is about 39,000, and the functions are similar to luteinizing hormone. We have talked about when we were discussing the functions of testosterone. Luteinizing hormone is responsible for the luteinization in ovaries and production of testosterone in testes. So the functions are similar to LH, and most important is the prevention of involution of corpus luteum. We have talked about. Then it is responsible for the continued production of estrogen and progesterone from the corpus luteum, persistent of corpus luteum, stimulation of corpus luteum, continued stimulation of corpus luteum. That has to be prevented from involution. That has to be increased in index activity with respect to production of estrogen and progesterone. So the continued production of estrogen and progesterone from the corpus luteum for a few months. We are going to see आगे कब तक, ये 3-4 महीने तक this production of the estrogen and progesterone continues from the corpus luteum. Estrogen and progesterone cause continued growth of endometrium. उनके function वही होंगे. They are responsible for the continued proliferation as well as the decidual reaction. Sorry. The development of the endometrial decidua and the deposition of nutrition and secretion by the gland, etc. Those functions we have talked about. So the continued production of estrogen and progesterone and growth of the endometrium. So the formation of decidual cells for the early nutrition. This we have talked about. ये progesterone, estrogen दोनों के मिलकर काम है. And so all these functions, they require this human chorionic gonadotrophic hormone. तो LH like action. तो LH का एक और काम भी है. हाँ, before that function of LH, human chorionic gonadotrophic hormone, इसी को हम continue करते हैं. This function of this, that is corpus luteum, persistence of corpus luteum. If corpus luteum is removed before 7th week of pregnancy, near 7th week of pregnancy, abortion will occur, because corpus luteum and its hormones are must for the maintenance of the pregnancy. अभी प्लेसेंटल ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल इतना नहीं है कि इसको जारी रख सकें प्रेगनेंसी को. तो
corpus luteum, ovarian estrogen and progesterone are required. If you remove corpus luteum before 7th week of pregnancy, spontaneous abortion will occur. वो वही काम होगा. Absence of estrogen and progesterone will cause the shedding of the endometrium, और उसमें this abortion will occur. And the implanted products of conception will be lost, so abortion will occur. And if corpus luteum is allowed to persist for at least 12 weeks, 12 weeks or 3 months, then chances are there that abortion and pregnancy may continue, but we know that the placental estrogen and progesterone are sufficient after this 12 weeks. Like normally corpus luteum of pregnancy slowly involutes after 12 weeks, 13th week to 16th week, 17th week, यानी 4th month, 5th month में जाके corpus luteum normally खुद बखुद involute होता है. That is not required. Corpus luteum of pregnancy slowly involutes कब? 13th week के बाद उसकी involution शुरू होती है, and it gradually is completed on 17th week. The 17th week meant after 4 months, 5th month has started. So the corpus luteum will involute gradually. And so after 12, up to 12 weeks, human chorionic gonadotrophic hormone is must for the maintenance of the pregnancy. So this is the first function of the corpus luteum, human chorionic gonadotropin, maintenance of corpus luteum, persistence of corpus luteum, and persistent secretion of estrogen and progesterone, which is must for the continuation of the pregnancy. So this graph is showing us the level of the human chorionic gonadotrophic hormone. This graph, red graph, is the human chorionic gonadotrophic hormone. ये दो हार्मोन, estrogen and progesterone. These are the placental estrogen and progesterone. Ovarian नहीं, ovarian produce. So placental estrogen and progesterone, they are gradually increasing. And after 16 or 12 weeks के बाद, the level is sufficient for the maintenance of the pregnancy. उससे पहले level is low, and it will not be possible for the continuation of the pregnancy if corpus luteum was absent. So ये graph देख लें. Estrogen and progesterone both continue parallel toward except toward the end of the pregnancy. उसको हम आगे लेबल करें. Estrogen continues to increase, progesterone static हो जाती है, plateau आ जाता है. So human chorionic gonadotropin ऐसे produce. This is again another graph from somewhere else. Google से लिए हुए graph हमने. So the estrogen and progesterone इस तरह के level है. So human chorionic gonadotropin produced by the chorion is less important after 4 months. अभी we have discussed it. And because the placenta takes over the hormonal secretion of estrogen and progesterone, no more requirement of the corpus luteum. Another very important function of the human chorionic gonadotrophic hormone, because it is similar to LH, and in male it is responsible for the production of testosterone in male baby. If the baby is in the intrauterine life, it stimulates the fetal testicular interstitial cells of Leydig. It is also known as ICSH. So LH की तरह. So this human chorionic gonadotrophic hormone, as it is similar to LH, the function is similar to LH. वो क्या है? Interstitial cell stimulation, that is production of testosterone from the fetal testis, and that is intrauterine function of testosterone we had discussed when we are talking about the functions of testosterone. That is development of the male genitalia and the descent of the testis. These are the two very important functions of the intrauterine testosterone secretion in male fetus. Male genitalia ki development and descent from the lumbar region into the scrotum. That is the function of this. So this is dependent upon the human chorionic gonadotrophic hormone. Now the second hormone, first hormone के हमने function discuss की. Second hormone, estrogen. Estrogen secreted by syncytial trophoblast we have talked about, and the level of estrogen, estrogenic activity, is 30 times the maximum estrogenic activity in non-gravid without pregnancy. Non-gravid means pregnancy के बगैर जो routinely monthly cycle में estrogen का level होता है. Pregnancy में it is estrogenic activity. Total level की बात नहीं कर रहा हूँ. It is 30 times the non-gravid level. It is a very important aspect of the estrogen production from the testosterone. Placental cells
synthesis trophoblasts, they are not capable of producing estrogen or progesterone de novo, there and then from the acetate or cholesterol. आपको पता है सारे स्टीरॉयड कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं. Placental cells, they are not capable of converting cholesterol into the estrogen or progesterone or androgen. होता क्या है फिर कैसे कन्वर्ट होते हैं? इट इज नॉट सिंथेसाइज्ड डी नोवो फ्रॉम द एसिटेट और कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द प्लेसेंटा. होता क्या है? दैट इज एंड्रोजन फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑफ द मदर एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑफ द डेवलपिंग फीटस. इन दो जगहों से एंड्रोजन, आपको पता है एंड्रोजन आर प्रोड्यूस फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स. एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑफ डेवलपिंग फीटस से भी adrenal, there is a large fetal zone of the adrenal cortex, उसमें होता है fetus में होता है adrenal cortex, आगे कहीं embryology में आप पढ़ेंगे. So the lot of androgens are produced from the fetal adrenal cortex and maternal adrenal cortex. ये दोनों produce androgen, male hormone, they are produced and they are brought to placenta, and placenta convert them into estrogen and progesterone. So the androgen from the adrenal cortex of mother and fetus are converted into estrogen. ये वहां से आती है. प्लेसेंटल सेल खुद नहीं बना सकते, कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट नहीं कर सकते, एंड्रोजन को कन्वर्ट कर सकते हैं. कुछ एडिशन सब्स्टिट्यूशन टू एंड्रोजन रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. वो कौन कौन से मेल हार्मोन है विच आर कमिंग फ्रॉम दी एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑफ द मदर और फीटस, दोनों से आ रहे हैं. डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन एंड 16 हाइड्रोक्सी डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन, ये नाम है, याद रख सकें तो वेरी एंड गुड. दीज आर द टू मेल हार्मोन. वो टेस्टोस्टेरोन नहीं है, टेस्टोस्टेरोन और डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन आर वेरी पावरफुल एंड्रोजन. दीज आर वीक एंड्रोजन बट दे आर देयर, वहां से प्रोड्यूस होते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स से. तो ये दो किस्म के डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन और 16 हाइड्रोक्सी डिहाइड्रो एपिएंड्रोस्टेरोन, ये दो मेल हार्मोन्स हैं. तो दे आर कन्वर्टेड इनटू इट. एक और इंपॉर्टेंट बात, क्या फर्क हमने की ईस्ट्रोजन का? एक फर्क हमने ये देखा कि ये ओवरीज तो खुद पैदा करते हैं ना ईस्ट्रोजन को, प्लेसेंटा खुद नहीं पैदा करता, वो कन्वर्ट करता है मेल हार्मोन को इनटू दी ईस्ट्रोजन, और प्रोजेस्टेरोन में भी इसी तरह. और दूसरा जो ओवेरियन ईस्ट्रोजन है, दैट इज बीटा एस्ट्राडियोल, दैट इज वेरी पावरफुल, वेरी पोटेंट ईस्ट्रोजन. ये एस्ट्रियोल है. द प्लेसेंटल जो ईस्ट्रोजन है दैट इज नॉट बीटा एस्ट्राडियोल, दैट ईस्ट्रोजन इज एस्ट्रियोल which is weaker, potency उसकी weak है. लेवल तो उसका मे बी 100 टाइम्स है, लेकिन पोटेंसी जो टोटल हमें अचीव होती है वो 30 टाइम्स. हम देख के आए ना पिछली किसी स्लाइड में, 30 टाइम्स दी लेवल ऐसा है. अदरवाइज तो अगर ये बीटा एस्ट्राडियोल 100 टाइम्स प्रोड्यूस हो तो पता नहीं फीमेल की हालत प्रेगनेंसी में क्या हो जाए, एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी. तो दिस एस्ट्रियोल इज प्रोड्यूस फ्रॉम दी प्लेसेंटा. एस्ट्राडियोल प्रोड्यूस नहीं होती. एस्ट्रियोल इज वीकर एस्ट्रोजन. So estrogen के इसके फंक्शन क्या है? Estriol is a weaker estrogenic potency than the ovarian beta estradiol. अभी मैंने ये बात की. And functions of this estrogen, we know the functions of estrogen. वो क्या फंक्शन हो गए? Enlargement of the uterus, ये काम तो करना है. And the uterus had to enlarge, this had to accommodate this products of conception. So there is enlargement of the fetus because this is the requirement of the time, and this is the function of estrogen. And then the second function, it continues proliferation of endometrium. estrogen का काम है वो शुरू में, that is the proliferation of endometrium, enlargement of the maternal breasts. They have to be prepared for the lactation after delivery. So there is further enlarged. We know the function of the estrogen on the stromal development and deposition of the fat and the ductile system laying down, all that function. That is final preparation is for the lactation. So enlargement of the breast. So laying down of the ductile system of the mammary glands. So ductile system are being laid down finally for the final lactation to take place. So very important. Enlargement of the external genitalia, etc. So all these are the functions of estrogen. आगे भी we continue functions of estrogen. This estrogen has got very important effect on the contractility of the uterus. Estrogen is oxytocic, that is it causes the increased contractility of the uterus. So इसको मैंने रेड में इसलिए लिखा है. This is जरूरी याद रखनी है. when we discuss the parturition, इसको याद रखना है. So this is increased contractility of the uterus. Estrogen causes increased contractility of the uterus. So
and then it is God is responsible for deposition of the fat in the breast and deposition of the fat throughout the female body, female hormonal, and the salt and water conservation like any steroid, it causes the conservation of salt and water by the kidney, ये भी काम करे, and this is the required. Blood volume has to be increased, आगे हम देखेंगे maternal response में हम देखेंगे. So the salt and water conservation by the kidney to increase the extracellular fluid volume, blood volume, which is required mother में ये क्या है. So it is responsible for the relaxation. It causes the contraction of the increased contractility, but it relaxes the pelvic ligament, for example the sacroiliac joint and the pubic symphysis, because the pubic symphysis sacroiliac ये इनको ढीला करेगी, so at the time of the birth baby can pass through the birth canal. थोड़े से relaxation of the pelvic ligaments will cause pubic symphysis and sacroiliac joints, उनकी relaxation करती है. So for easy passage of the fetus during labor through this birth canal, ये birth canal बन रही है through which it has to pass through. Bone जो हैं उनको ढीला करेगी, so that head of the fetus सबसे important diameter head का ही होता है, that has to pass through. So these are the functions of the placental estrogen. Third hormone, progesterone. Progesterone level is about 10 times the non-gravid level. Without pregnancy, जो the reproductive cycle में progesterone का level होता है, pregnancy में 10 times more level is achieved, and it is synthesis from the उसका synthesis उसी तरह है, not from the adrenal cortical androgens coming to the placenta, and they are converted into progesterone as well. And the functions क्या होंगे? वही डेवलपमेंट ऑफ द डिसिडुआ सेल. पहला फंक्शन तो ये है कि एंडोमेट्रियम को थिक करना है. डिसिडुआ सेल में न्यूट्रिशन हैव टू बी डिपॉजिटेड एंड द इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब एंड एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स. इसके फंक्शन हमने डिस्कस किए, वो फंक्शन कंटिन्यू करें थ्रू इन द प्रेगनेंसी एज वेल. बट ये फिर मैंने रेड में लिखा है, इट इज on the uterine contractility effect is opposite to estrogen. It reduces the contractility of the uterus. वो ग्राफ में मैं कह रहा था कि दोनों का parallel level देख लें. Both estrogen and progesterone, they are parallel with the almost throughout the pregnancy. Toward the end of the pregnancy, estrogen बढ़ती है. So the it reduces the contractility of the uterus, opposes the effect of estrogen. So the pregnancy is maintained. अगर estrogen का level इतना ज़्यादा है उसको allow करते, अगर ये function ना होता तो abortion would have occurred. So this reduced contractility of the uterine muscle is very important function, and this is responsible effect इसका breast पर भी है. It is responsible for the final preparation in the form of the development of the alveoli and duct, the lobules of the mammary gland. मिल्क सिक्रीशन डज नॉट अकर. ये दोनों बल्कि रोकती हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मिल्क सिक्रीशन को रोकती हैं. बट फाइनल डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट एल्वियोलाई और लैब्यूल्स जो हमने फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन में पहले भी डिस्कस किया है, अब तो फाइनल प्रिपरेशन हो रही है, एंड फाइनल लैब्यूल्स एंड मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, फाइनल प्रिपरेशन ऑफ द ब्रेस्ट फॉर द लैक्टेशन. तो बोथ हार्मोन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, बाकी बॉडी के इफेक्ट भी हैं, पहले पढ़े हुए हैं. ब्रेस्ट पे स्पेशली इफेक्ट फॉर द फाइनल प्रिपरेशन ऑफ द ब्रेस्ट फॉर द लैक्टेशन. So estrogen, fourth hormone, अब आ जाए. Estrogen, progesterone, human chorionic gonadotropin. Fourth hormone is human chorionic somatomammotropic hormone, and it is also a hormone protein है, and molecular weight इसका 38,000 है, and secretion starts in 5th week of the pregnancy. वो human chorionic gonadotropin तो बहुत early produce होती है ना, ये 5th week पे production इसकी start होती है. इसका ज़्यादा बहुत early चाहिए नहीं, वो तो बहुत early चाहिए for the prevention of involution of corpus luteum. So this human chorionic somatomammotropic, दो बात है, somatotrophic भी है, ग्रोथ हार्मोन की तरह के फंक्शन भी है, और मेमोट्रोपिक भी है, इलेक्ट्रोजेनिक एक्टिविटी भी है. सो द सिक्रीशन स्टार्ट इंक्रीजेस थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, पर कंटिन्यू इंक्रीज करती है, एंड काजेस डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट. ये इलेक्ट्रोजेनिक एक्टिविटी है, ये ब्रेस्ट की डेवलपमेंट में ये भी कंट्रीब्यूट करती है, एंड एक्चुअल मिल्क सिक्रीशन भी कर सकती है लोअर एनिमल. लेकिन ह्यूमन बीइंग में मिल्क सिक्रीशन इसलिए नहीं करती कि जैसे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल वेरी हाई लेवल प्रिवेंट्स मिल्क सिक्रीशन. ये तो मिल्क सिक्रीशन की तरफ लेके जाती है ब्रेस्ट को, प्रोलैक्टिन की तरह का काम है, इसलिए इसको पुराना नाम इसका प्लेसेंटल लैक्टोजन था.
आप इसको ह्यूमन कोरियानिक सोमेटोमेमोट्रोपिक कहते हैं। तो दी इसका इसका इनिशियली नेम्ड एज प्लेसेंटल लैक्टोजन, इसलिए कि ये मिल्क सिक्रीजन वाला काम कर सकती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में इसलिए नहीं होता कि वेरी हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रिवेंट इसके इफेक्ट्स को अपोज करते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सो ग्रोथ हार्मोन लाइक एक्शन भी है इसके। इट इज सोमैटोट्रोफिक हार्मोन, इसका नाम है सोमैटोट्रोफिक, सोमैटोमेमोट्रोफिक। मेमोट्रोफिक तो फंक्शन हो गया ना, इलेक्ट्रोजेनिक एक्टिविटी वो कर सकती है, लेकिन प्रिवेंट कर रही है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। लेकिन डेवलपमेंट में इट कंट्रीब्यूट्स, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट में फाइनल प्रिपरेशन के लिए। ग्रोथ हार्मोन लाइक एक्शंस दे आर वीकर, नॉट एज स्ट्रांग एज द ग्रोथ हार्मोन, लेकिन वो क्या है? What are the important? Decrease insulin sensitivity of the maternal tissue and decrease utilization of glucose by the mother. इसका क्या फायदा? Glucose has to be supplied to the fetus as well. मदर की ग्लूकोज कुछ ना कुछ मदर में उसकी यूटिलाइजेशन कम हो कि फीटस को भी सप्लाई कर सके। मदर हैज टू सप्लाई दिस ग्लूकोज टू द फीटस एज वेल। तो मदर में सम रिडक्शन इन द ग्लूकोज यूटिलाइजेशन में भी बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। तो डिक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द मदर एंड मोबिलाइजेशन ऑफ द फैटी एसिड। ग्रोथ हार्मोन के काम क्या पढ़े हुए हैं आपने, ग्रोथ एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़े होंगे। दैट कॉजेज मोबिलाइजेशन ऑफ द फैटी एसिड, दो फैटी एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फीटस एज वेल। तो मोबिलाइजेशन ऑफ द फैटी एसिड फॉर मदर एंड फीटस बोथ। ये फैटी एसिड किसे? मदर को भी चाहिए और फीटस को भी चाहिए। एंड सो दी इसका काम ग्रोथ हार्मोन की तरफ ये ह्यूमन कोरियानिक सोमैटोट्रोपिक। एंड ये इकट्ठा ग्राफ है। रिलैक्सिन को हमने छोड़ दिया है। रिलैक्सिन इज द हार्मोन व्हिच कॉजेज द रिलैक्सेशन इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस। वो जो हमने काम किया, ईस्ट्रोजन का भी काम है। ईस्ट्रोजन आल्सो कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ द पेल्विक लिगामेंट, सैक्रोइलियक जॉइंट और प्यूबिक सिम्फिसिस की बात, वो काम ये भी रिलैक्सिन भी करती है। इट आल्सो कंट्रीब्यूट्स एंड हेल्प्स द डायलेट द यूट्राइन सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर, ये भी यूट्राइन सर्विस को करती है। सो रिलैक्सिन का जो पांचवी हार्मोन है उसका फंक्शन है। दिस इज ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिक। इट कॉजेज द कार्पस ल्यूटियम को कंटिन्यू प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है, तो वो उसके जो काम है। इट प्रिपेयर द मेमोरी ग्लैंड एंड प्रिपेयर्स मदर्स बॉडी फॉर बर्थ ऑफ द बेबी, मेंटेन द एंडोमेट्रियम। और ह्यूमन कोरियानिक सोमैटोमेमोट्रोपिक हेल्प टू प्रिपेयर द मेमोरी ग्लैंड एंड एनहांसेस द ग्रोथ, इंक्रीजिंग प्रोटीन सिंथेसिस करती है एंड डिक्रीजेस द ग्लूकोज यूज्ड बाय द मदर। अभी हम बात करके आएंगे। एंड द कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी है, दैट इज द प्लेसेंटा से ये एक और हार्मोन भी पैदा होती है, कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। शायद ये इंपॉर्टेंट हो फॉर दी दैट इज एस्टैब्लिशेस द टाइम ऑफ द बर्थ एंड इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ कार्टिसोल। वो फीटस के कार्टिक्स पे एक्शन करने वाली, वो प्रोबेबली एंड्रोजन के प्रोड्यूस करने के लिए, यहाँ नहीं लिखा हुआ एंड्रोजन के प्रोड्यूस, जो एंड्रोजन प्रोड्यूस हो रही हैं फ्रॉम द फीटल कार्टेक्स, उस तरह का काम है। तो दिस ह्यूमन कोरियानिक कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस्म का काम, इट कॉजेज द रिलीज ऑफ ACTH टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टिकल एंड्रोजेंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर टू बी कन्वर्टेड, दे आर टू बी कन्वर्टेड इनटू प्लेसेंटल ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये एक ही स्लाइड में इसके फंक्शन। तो ये प्लेसेंटल हार्मोन्स के हमने ये 5 और 6, एक और हार्मोन 6 हार्मोन, ये हमने नाम लिए। 4 बड़ी हैं, उनके बड़े काम है। ये तो प्लेसेंटल हार्मोन थे, लेकिन मदर में हमारे लेक्चर का हेडिंग है हार्मोनल फैक्टर्स इन प्रेगनेंसी। ये 4 बड़ा फैक्टर्स हैं, 4 5 6 हार्मोन जो हमने डिस्कस किए, 4 बड़े हार्मोन। बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है मदर के, दे आर also overactive, वो भी ज्यादा ओवर एक्टिव होते हैं बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिज्म। मदर का टोटली डिफरेंट है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में पिट्यूटरी हार्मोन्स आर मोर रिक्वायर्ड, देयर इज इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ ACTH, TSH, प्रोलैक्टिन। अभी ACTH का जिक्र अभी पिछली स्लाइड में आया था। कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दिस इज कार्टिकोट्रोपिन। कार्टिकोट्रोपिन हैज टू इंक्रीज के हमने देयर इज मोर प्रोडक्शन ऑफ मोर, दिस इज रिक्वायर्ड, cortisol is required, androgens are required, and there is increased requirement of TSH because the thyroxine is required metabolism। मदर का इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है, उसके लिए थायरॉक्सिन चाहिए। प्रोलैक्टिन, ये भी एक लैक्टोजन है। ब्रेस्ट की डेवलपमेंट में प्रोलैक्टिन का रोल है, मिल्क सिक्रीशन उसका काम है, लेकिन ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, दिस इज लैक्टोजन। लैक्टोजन जो ह्यूमन कोरियानिक सोमैटोमेमोट्रोपिक हार्मोन को लैक्टोजन बोला था, इसको भी लैक्टोजन पहले बोलते थे, प्रोलैक्टिन।
So इसका भी काम है. So all the anti-repituitary hormone they are increased. There is a decrease FSHLH. हाँ ये तो पता है. Negative feedback because estrogen and progesterone जब ज्यादा है they inhibit the pituitary FSH&LH. Pituitary gonadotrophic hormone वो बहुत कम हो जाएंगे. ये placental gonadotrophic hormone human chorionic gonadotrophic वो मौजूद है. ये pituitary वाले दोनों कम हो जाएंगे. LH और FSH दोनों कम हो जाएंगे. एड्रीनल कॉर्टेक्स की बात कर चुके हैं. देयर इज मोर सिक्रीशन ऑफ कार्टिसोल, एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजन. ये भी जरूरी है. ये दोनों मदर के एल्डोस्टेरोन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. कार्टिसोल इज रिक्वायर्ड फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड द फैटी एसिड जो इज रिक्वायर्ड वो मदर फीटस को चाहिए. पहले भी कहीं जिक्र किया था. एंड्रोजन का आज डिटेल में हमने जिक्र किया. फीटस दे आर रिक्वायर्ड फॉर टू बी कन्वर्टेड इनटू प्लेसेंटल ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. थायराइड ग्लैंड ये TSH चाहिए. वो थायराइड के लिए भी सिक्रीशन T3 T4 एंड दैट इज रिक्वायर्ड. मदर के मेटाबॉलिज्म इज वेरी हाई. उसका मेटाबॉलिक रेट इज मोर. एंड द पैराथायराइड ग्लैंड कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द फीटस एज वेल. मदर को तो कैल्शियम जितना भी है. पैराथायराइड हार्मोन की रेगुलेशन हमने डिस्कस की हुई है. एंडोक्राइनोलॉजी में डिस्कस की है. मेरे लेक्चर में आपने खुद भी पढ़ा होगा. तो द पैराथायराइड ग्लैंड इज इंक्रीज पैराथायराइड हार्मोन. इसका काम इसको एलैबोरेट कर रहे हैं. पैराथायराइड हार्मोन causes mobilization of this calcium from the maternal bones. And this calcium is required for to be supplied to the fetus. Fetus की bone develop कर रही हैं. वो कैल्शियम कहाँ से लाएगा? मदर की कैल्शियम को इस्तेमाल करेगा. So there is increased parathyroid hormone activity in the pregnant lady. और ovaries का function तो हम बात करके आ गए हैं. There is increased estrogen and progesterone. Corpus luteum का function हम discuss करके आ गए हैं. तो ovaries are also producing उसका corpus luteum वाला काम है. Secretion of relaxin. Relaxin is produced from the placenta as well as from the ovaries. Relaxin ka function, relaxation of the pelvic ligaments and the relaxation of the this cervix of the uterus usko soft karta hai so that it can open for the head of the baby for the delivery of the baby. And it is relaxin hai kya polypeptide and 9000 molecular weight hai. तो ये भी एक प्रोटीन है. Also produced by placenta. ये बात जिक्र करके आ गए. So the and causes relaxation of the pelvic ligaments. ये फंक्शन हम डिस्कस करके आ गए. So this was about the hormonal factors in pregnancy. Placental hormone very important effect. लेकिन बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड जो मदर के हैं, मोस्ट ऑफ द एंडोक्राइन, पिट्यूटरी एंड थायराइड एंड पैराथायराइड और दिस एड्रीनल कॉर्टेक्स, सारे हार्मोन बढ़ जाते हैं मदर में. दे आर रिक्वायर्ड एंड दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ये भी मदर का रिस्पॉन्स था, इसमें भी शामिल था. other responses of the mother, pregnant lady का to response to of mother to pregnancy, और क्या important changes आती हैं mother में, response of the mother to this pregnancy. Next time we are going to talk about. Hope you are following me. If you have got some problem and you can ask me in my comment section, and please do subscribe and please do share this video to rest of the medical community or medical students. और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, this is a सदका जारिया for me और सदका जारिया for you अगर आप भी इसमें शामिल होंगे शेयर करके. Thank you very much. Hope to see you next time. Thank you.